Welcome back, guys. Welcome back. Give me a minute. News in 2 minutes. Sorry for being late. Uh, let's see. Uh, see. Let me connect my Bluetooth. Okay. News in 1 minute. We hope we are ready for that. Uh, Okay, news in 1 minute. Let's go, guys. Let me share my screen. Uh, we're up 300 pips today. I hope you sold from the same level. If you, it's good, but the selling would recommend is this a selling that I've just shared in the Telegram group. So we might look for this. This might be a good thing because after that, this buying is what I'm interested in. Or maybe we'll see if it takes liquidity down this level. And there's actually 87 pay. We have a market structure following in a daily time frame. So we'll see that. So news in 23 seconds. Let me be checking this Forex factory that I am updated. So 4.5 is a forecast. Even though it's 4.5, it doesn't matter. So news trading now only after this level cut test. Maybe we'll wait for that. Okay. Uh, we have the candle. Nothing happening. They touch the level a little bit. Yep. So you can sell from this, guys. You can sell. You can start selling a little bit. Let's see a little bit of what do you say, 1 minute ka red or something. The problem with this scalp is 1 minute ka red also will form a bigger candle. So let's wait. It's selling only. Don't panic. Don't get into buying. I mean, it is buying. I know this is a good level, but the best buying that it could do might be after taking this liquidity, or maybe after very fast. No, yeah. Mhm. I was in a buy here. I just exited my buy. So this selling, if 1 minute already happened and we're seeing some rejection, maybe we can try this selling. Okay, because this buying might not be what I'm interested in, because maybe after this liquidity we'll see, because there is a double bottom here is a concerning thing, which will say key from here only market might go up. But 4 hour pay, let's see the closing where it happened here. About, yeah, good closing actually, but still the market structure would want it to be around here, which is 287.3. That's what I'm looking for. So if you are in this trade, you can be in this trade. Uh, so I sorry, news ka bhul hi gaya. What is, I think same only, because nothing is moving. I think it's the same only. Yeah, that's predicted. It's 4.5, 4.5. Nothing is moving. I hope you are in this trade. I just sold. I sold around here. Okay, but stops you can put above this only. Okay, and the targets could be a scalp, could be this, right? Two possibilities. Could be a scalp, could be 150 pips. Let's go, guys. Let's go. See, देखा है volume देखा है? See, that is what I'm talking about. Be risk free, guys. Be risk free. So volume is important. So when volume is there, we kind of have these kind of candles. Let's go, guys. Be risk free. 30 pips का लगा सकते हो stop. Let's go. Good selling level. I hope you can see my screen, right? Yeah, I'm sharing the screen. No worries on that. Let's go. Let's go. Be risk free. Everybody be risk free.
Hmm. Yeah, if 15 minute closes below this level, we might have to look for a bigger selling drop. You should take it to 282. 282 के बाद तो it's free space. I don't think that would happen. That is a very unlikely scenario. Even though we have a lot of volume today, that might not happen. I hope it doesn't. I don't think it will happen. That sell off, because it's the same, right? So it doesn't matter. So always DXY reacting for this. It's the same. I mean, it might fall down a little bit. So buying in gold would be a better option. But this selling is fine. This doing this selling is completely fine. But the target should be around here only 75 bits. The first, the one we just kept it, right? Hmm. Let's see if this is engulfing candle. We can stay a little bit longer. In 5 minutes, is it an engulfing candle? Yeah, let's see. Uh, so here it's trying to follow all those levels. Mm, all speaks around at 12 o'clock. So we might have a bigger volume there also. Now we have volume. We have a lot of volume here. It's yeah, it has become an order block now. So it's probably good for us. Let's see. I hope you are risk free. If you're not risk free, please be risk free. Please be risk free in this trade. See, the moment is coming. Momentum is coming. Okay, be risk free. Might make this as a breaker block, but it's not. It doesn't want to make that a breaker block. By the way, let's see where 50% is coming at. Okay. Mm-hmm. Okay, but I'm not worried about this because even though this double bottom is a little bit worrying, mm, I think if the best selling would come from this level, it would be this. Or it will take this internal liquidity sweep and test this level and go up. So that, but I want, uh, what I want is of course, uh, sorry, not this trade to form here, but I don't want to be in drawdown because drawdown pay your mentality gets a little bit down. So I don't want to be in a drawdown. Rather, mm, should we target here only? 15-minute candle. Yeah. See, this would be a better indication for us. If this closes below this low, I'll try to stay in this trade until I don't know, maybe this 100 pips, 100 pips. It shouldn't be that difficult. If it closes below this, we'll keep the targets here on the 175 pips. Okay, we're already up 300 pips. So the trade was given already, I think, in the higher time frame. So you can see it maybe this side. Where's that trade? In the different chart. Yeah, this was the trade. But the problem was this was the trade. The problem is it was consolidating. So I told you not to do this. But when it came to the same level around here, that is when I told you guys to do it, and it was a clean thing, right? Because this consolidation is expected after this happening, and this happening, this consolidation was expected. I also posted in the group as well saying ki this consolidation was already expected, but we expected consolidation little below it happening at a 33 level. We expected to be 30 ka, so that is why we have that kind of a stop loss. But nevertheless,
So I was selling from 29 only. I have shown you my trade as well in the Telegram group. I have shared you that. Uh, yeah, so I have a lot of confidence in that because yesterday we discussed. What did we discuss? Today a candle will give a wick to us, and after that week, that is our entry, right? That week is this. So I entered in the week. I was happy whenever I entered. So that was the trade, right? That should be pretty easy for you. I mean, this is like playbook trade, but yeah, RRs are a little bit effed up because of this, because of consolidation. That is all. But this 300 pip ka move, 247, no 240 pip ka no. Okay, it was only 240 pips. Mhm. So how did I capture to 300? Yes, I have captured 300. Okay, maybe I sold at 29 there, which does make it 270. I hold it till okay 301 tak I hold it. So 301 tak I hold it around here. Yeah, I think around that only 290 to 300 pips. But let's not get into that. That trade was 240 pips per trade. 240, 250 pips per trade. Okay. Hope you are risk free in the selling that we are doing because we are getting a little pullback. Uh, it's market is indecisive now, and also it's a 50% level actually. I just checking, and it's actually a 50% level. I mean, it didn't touch it quite. This is a different chart now. Let's see this chart, which is more accurate. Could this be buying? Because that is a good level to buy from. Could this be buying? It could be, but we are risk free, so it doesn't matter. Mm, this could be a buying, but okay, because DXY will fall as I told you. Yeah, it's falling before only because I wanted it to test this level. 297 already tested this level. I think it was 295 a level. Oh, okay, fine. It doesn't take it out that much. We can wait for it. We are already risk free. Let's wait for this to clear. 30 pips जाए तो जाए क्या ही है ठीक है it's a fine trade only. Let's see. I mean, buying from this level is looking intriguing, but there's gold pay buying. Yeah, I mean, reversal will come here only. I know, but should we wait for the liquidity sweep? That is the main point. And would that happen from here only? That is the another point. So let's see. Let's see how much how that have we got. Hmm. So I want this candle to be green and the next candle to be red, bigger red. That might work for us. ठीक है. Hmm. Okay. What else is there? We are. I mean, this buying could be one of the biggest buying because there are a lot of fair value gaps to fill, which is 324 ka one fair value gap is there, so which is 200 pips easily we could capture. But yeah, we could capture that because I think this would be a reversal point. So that reversal, let me see 15 minute may we have double bottom. Yeah, we have double bottom in 15 minutes, which is good for buying. 1 hour pay. 1 hour pay also we have double bottom. I did not see that. Hmm. I mean, it's probably good to buy, but I'm still waiting for 295 ka level. This is a good level also. 297 is also a good level.
but 295 will be better for me because I'll have a good stop loss. Let's see what the market does. If it makes a change of character, we can buy 15 minute 5 minute it's very rush, but change of character after this level. uh, yeah, after this level it will change its character, then it will retest it around this level only. It will retest it, so this would be the buying. The sell will be 50 bips if it closes above this, or as I told you, one is this significant buying a level, or other that taking this liquidity and testing this level market structure and going up, right? I don't know which is more likely, because DXY, if it keeps falling, it's taking support from order block level. If it keeps falling, I don't think it will fall now. It will, I think, test these levels, because it's a good news for all over pay. It's a good news for DXY only. This is just a pullback, so we might see that internal liquidity sweep of gold anyway. We might see. So stay in this state. So nothing is going for you in this state. I am still in this trade. You are risk free in this trade, right? 75 pips का is the first profit. ठीक है. Mhm. Let's see. 50 minute का close happened. Uh, it always does this ना gold. भाई क्या करता है gold? See how it closed. It's not giving confirmation at all, right? Because if it closed below that level, everybody would sell, and it's a confirmation. It's not giving that. It did not close below this level. So now we don't have a clear information of what it's going to do. Hmm. Harami gold. See the closing is right. Right. It's just above this closing, because it had to be just below this to prepare for us for selling, but it was just above it. Now I don't know. People who want to sell doesn't want to sell now, of course, right? Okay. Hmm. Gold always does this. This is something we should. Something that we should learn. Nothing we can do to the markets. We can do to the markets, right? Let me remove this. We will have a clear understanding. This move already explained you yesterday how this move will happen. Yesterday, the trade was already given to you in the streams. So, 250 pips ka, trade this was, and now we are currently running from this live stream trade only. From in the live stream only we did 55 pips, 50 pips currently running, and risk free because 32 pips is our stop loss around this high. So it probably up by 300 pips overall day level pay, which is not that great considering. I mean, which is great considering the moves, but which is not great considering the volume, because we had a lot of volume today, but the movement was only 300 pips. So because see, this news came the same. So 4.5 percentage was the federal rate and interest decision, and that was the same. So of course there would be higher volume to follow more price action, but consequently there won't be anything that we want. I mean, any see what it signifies is when 4.5% will become 4.25%, which is good for gold, that will form a very big green candle, right? In that time, at that time pay, it will form a very big green candle, because all the limit orders, all of them are getting placed, all of them are being executed at the same time. So that will in turn make gold make a bigger
candle which is around 200 to 300 pips, then you'll have a volume to trade. So you can sell, you can buy, you can do both of those things, catching the pips. But see, the only move was this, and we captured that move, right? Yesterday, I've drawn a trend line in this chart. Let's see how well it was used. Mhm. Mota, yes, it was done well only. Has done well. 1 hour pay might be will have a little bit more confirmation how it's done. The retest didn't happen in 1 hour. 15 minute pay retest happened. Closes above, below this. Not that significant. And not I wouldn't consider this a trend line trade. This is just a consolidation cut trade and all. But this is expected. This move was expected, and yeah, 250 pips. Only this move happened today, and we captured that move, right? So whatever move that will come here, I mean, I told you to the higher targets for this. No, this was a 290, 297. Yeah, higher targets were 300 pips. I hope you know that because see, this is the buying level. We already marked this buying is the buying level. That is why this is our TP, which is around 280 pips. But why did we take it out at here only? Because I was telling you here only because I was telling you this was not a good level of buying. We already seen that, but it could be a good level of buying if gold takes that liquidity, which there is a lot of liquidity there. If gold takes that liquidity and forms, it has formed a good candle, but after all of this, coming reversal at the same point is difficult because I know that this level is not that good of a buying level. So that is also back in the back of my mind and back of all the traders, and that yeah, they just I don't think they have bought it. See, that is what happened. What is this line though? What is this line? Is this the line of this? Hi? No, that line is. Anyway, I'm just trying to tell you that. So, should we buy? Is the question. Should we buy? But let's see. Let's have a selling trade go. SL hit करने देते हैं. Then we can buy. So this is a trade that I was doing myself. I didn't post it in a Telegram because I saw a double bottom. Double bottom I saw, and that was a level of our buying level, right? One actually you were told to buy after 1 minute ka. So 1 minute ka green candle, if you see also is over here. 50 pips ka stop loss you could have kept. 50, yeah, 50 भी नहीं, 44 pips का stop loss. And 50 का stop loss you could have kept, and you could have done this. At this 100 pips you could have captured. But nevertheless, I'm not going to consider that because I'm not told in the Telegram channel to do this. But you should know this is a trade that you should know. But I did it from here only. Let me show you that. Yeah, from here only because it was a double bottom. I did it in the second time, not the first. Yeah, that was the trade. That was I told you now at the start of the stream I was holding a buy, and that is the buy. That is the buy I bought from here. Okay. But currently we are in this selling. This selling. So let's concentrate on that. It looks like it's consolidating. I don't know why it's consolidating at this point. It should give us a clear direction. XY, what it is doing. Yeah, the XY fish is coming down, gold going up, but with a higher momentum. Buying, maybe this is the buying yes that. But let's be in this trade. This is a good level actually, but I'm hoping for this level 95. Mm, so also 50% the level yet, right? Mm, not even 50%.
50% is here, which is 97. I don't think it comes back to that level. People are going to buy from it. It's highly unlikely. 60%, which is, yeah. This target one is fine, which we will take out 80% of our quantity. 80 nikale or 50? Because we already risk free, so maybe we'll remove around, I don't know, 80% remove karte because we're in, let's see, 80% let's remove. So one other thing, when it is at a selling of this kind, I always told you it will form double bottoms, and it has formed double bottoms. But for our pay, I'm which is, to be honest, this is not fair because it has double everywhere. 50-minute pay, it has a double bottom, which is a good level. It is a good level. It's gone buying from. So this liquidity sweep that we're looking for might be a little out of bounds, but overall pay this level should be 295 level should be at least tested, or at least the significant order block should be tested here only. When it comes back to those levels, maybe we'll have zero buying because already it's already tested. Once it's already tested, we will might test again. Uh, then we might have it. Okay. Let's see. I mean, I'm not sure as well. See, even the market is not sure what it's doing, but it's going on in our direction, which is good. Which is always good. We are risk free, so I mean, how many times it gave us entry? We could have entered here again. We could have risk free here again. I mean, it's a consolidation market only, but the volume is high. So volume is good. Volume is good, which is good. So lower level पे कुछ है ही नहीं इधर ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ है ही नहीं इधर है तो ऑर्डर ब्लॉक ठीक है वी कैन 75 बिप्स पे बुक कर सकते हैं लेकिन 80% बुक करेंगे लेट्स सी हाउ इट विल प्ले आउट लेट्स सी हाउ इट विल प्ले आउट 80 75 बिप्स पे बुक कर देना सो ऐसा देख लिया तो 250 प्लस 75 हो गया 325 पिप्स अप फॉर द डे गुड थिंग गुड but I was hoping at least 5 today. Even I didn't capture that much because I do a lot of trades, right? So that even that buying I did, it was only 80 pips ka buying, uh, and selling 300 pips, 380, and now it's around 50 pips, 350, 40 pips, 40 pips. So yeah, mota around there only, we are there only. We're lucky they're around that. Let's see. Let's wait because 12 pay will have a lot of volume, which will enable us to have bigger trades. Okay, I mean, it's just the two 50-minute candles, right? So consolidation. It may be if it forms a green candle and it starts falling down, should we sell? I mean, there's another possibility that could happen is DXY is rising. I don't think it would rise up, but even though it's rising, I think we should buy in gold because DXY is not with us. But buying per where, that is the important thing. So 290 is something we can buy from, which is a good level, or this level, which I wouldn't hesitate buying from because 295 I can hesitate a little bit because there is a good level just below only. So let's see. 295 I'll buy regardless because it's a 60% level and 294 here is an order block. So yeah, let's see this order block. This is a 50-minute order block का अगर test होता है, let's see. Uh, I hope for a bigger volume than this. The volume is there. Maybe it's trying to tell us something. Let's try to understand that.
So now it wants to come down, but what is stopping it? Let's say this is a green candle is going to form. It comes down after this. That says it has followed what? Nothing. 5 minutes before is nothing there. At least only this hiker retest it will be doing. So nothing for uh, nothing good if it forms a green candle. Nothing bad as well. So the XY falling. So now it's a pressure on gold. So 12 होने वाला है. You might see some movement. News. Yeah. FOMC press conference is there. Powell चाचा बात करेंगे. Will tell us what's going to happen, what's how economy and all that. So we will be ready for that. Mm, we'll be ready for that. Mm, yeah, pretty good day considering the moves. Considering the volume, it's not that great day because 500 pips was expected. I was expecting 500 pips at least. Let me connect my charger. Yeah, okay, sorry, just missed it. Yeah, I think 80% बुक कर दो guys. 80% लेवल पे आ गया. मैं भी बुक कर लेता हूँ 80%. 80% बुक कर लो. वेट भी कर सकते हो अगर यही है जो बाइंग में जाने वाला है तो वी कैन हैव double bottom, right? So if that happens, maybe we'll I mean we can hold for till that, no? Let's wait for double bottom. Mm, a good momentum, good momentum. What is DXY doing is that is very important. It's trying to fall as well. It's trying to fall, it's falling. That is saying gold is finding its level. Gold is finding its buying level. Let's go, guys. Let's go. Come on. Come on, guys. Let's go. 80 pips in the chat. 90 pips. Let's go. Let's go, guys. So, even if some buying will come around here, क्या कौन सा level है? Yeah, 15-minute का order block now just tested. So even some buying will come around here. We'll have a double bottom. So when that happens, when it comes up and comes down, then we can book our trade. No, that will be better. But if you want to book from here only, you can book. I'm not against that at all. Okay. The target we wanted to achieve was 75. We achieved 90, which to me is good thing. So should I go into buying? So that is a thing we should discuss. Should we go into buying? Mm, so internal liquidity sweep we are ignoring if we are going to buying from here only. Is this a 60% level? I think this is a 60% level which is giving us. Yeah, 60% level के नीचे तो आ गया है. That means कि it will, in the strategy is if it closes below this level, 60% ka level, it will close below this, right? Mm, let's see.
this close will be important as well. So this close, let's observe this close. इसके बाद हम ले सकते हैं, अगर इसका क्लोज होता है below this, then we can probably hold a lot. If it happens below this also, 50% also, we can hold a little bit longer. But if it happens here, wherever that is, then should go into buying from the next buying setup. Okay, cool. Let's go, guys. I think we can make this a 100 pip cut trade. Here it is. So finally that I reached my 500 pips ka target today. But you guys, I think, ooh, ooh, you see that? You see that? What just happened? So yeah, I was expecting this might happen somehow, and it's happening. Okay, so when it gives a double bottom, we'll exit. 100 pips to de gaya. 100 pips to it gave. So buying on, guys. Buying on. The XY are falling as usual. It's known. Close कहाँ पे हुआ? This close is very important as I told you. Close तो नीचे किया है. क्या हो रहा है? Close तो नीचे किया है. ठीक है. Anyway, good trade this was. 100 pips capture कर लिया तो कर लिया. अगर अभी भी हो trade पे, it's fine only because I'm thinking it will give a double bottom. But let's see. Because bearish, see, the momentum of gold is very bearish, right? Very bearish gold pay when you are trying to buy. At least tell people that it is a good level to buy by giving a double bottom, right? So that is what my expectation is, and I think we should reach that. Let's see. This is a 5 minute ka, 15 minute ka, what it's doing. 15 minute ka close wasn't that good as well. So yeah, 15 minute ka order blocks se only buying is coming. Maybe we should have bought from there. But anyway, I'm telling you कि double bottom पे buy करेंगे. Double bottom might be here also. 295 में भी आ सकता है. So let's wait for that. The volume is there. The volume is there. I can understand it and get it. See, DXY doing this kind of dances. That is why this will happen. Let's see. Double bottom, double bottom. भाई क्या हो रहा है? Guys, let's go. Maybe we can have a liquidity sweep. I don't know, but this is the last buying level. So maybe, yeah, book here only. So that is the only thing I can tell you. Book करते हैं. Buying पे let's wait. Buying के लिए let's wait a little bit. But selling का please book. 120 pips it gave. 100 pips also please book. Buying पे let's wait. Let's wait and see how the market is going to react. I'm waiting for double bottom. ठीक है. I'm out of this trade. Please be out of this trade because it just went 5 minutes पे I think it gave double bottom, right? So see, it's kind of a double bottom and it tested that only buying level it has. So one of two things could happen. See, double bottom is already formed, so it's done and dusted here. So from here only it will go up. Uh, it could be a possibility, but another thing, it could form a green candle. This would be a green candle. Then it will start selling from here, and maybe we'll have this liquidity or only selling. So two possibilities. Still, please book this trade. We are already. I mean, हो गया है भाई, हो गया है. कितना ही करोगे इसको? I mean, होल्ड करके रख सकते हो
अगर तुमको इंट्यूशन है कि बाई सेलिंग में ही जाएगा, लेकिन दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में भी आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक. सो डबल बॉटम भी है इसके पास. सो द बेस्ट बाइंग इज दिस ओनली. सो बाइंग इधर करते हैं, बट 5 मिनट पे बॉटम लगने के बाद करते हैं. बट सेलिंग, ये बोल रहा हूँ कि सेलिंग तो बुक कर दिया करो. 100 पिप्स तो किया होंगे एटलीस्ट, क्योंकि 120 पिप्स का रेट, 130 पिप्स गया था. ठीक है. दिस लेवल वाज आवर इंटरेस्ट 110 पिप्स, एटलीस्ट 110 पिप्स यू शुड हैव डन. ओके फ्रॉम दिस ट्रेड. ठीक है. बाइंग बाइंग, गिव अस बाइंग प्लीज. बाइंग दे देना गोल्ड. कुछ तो बात हो रही है, इसीलिए तो ऐसे मोमेंट आ रहा है. कुछ तो बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात चल रही है. 1 मिनट पे बॉटम पे बाई कर रहे हैं इधर से. दम है. एक छोटी सी बाइंग लगा लो, छोटी सी बाइंग. चलो करते हैं बाइंग. ठीक है, करते हैं. छोटी सी बाइंग करते हैं. इट लेवल, हमारे लेवल तक तो आ ही गया. ठीक है, छोटी सी बाइंग करते हैं. अरे भाई क्या हो गया? अरे सेल करो भाई, सेल करो. सेल करो, यहाँ यहाँ से सेल करो. स्कैल्प करते हैं चलो. स्कैल्प करते हैं चलो. चलो स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग मोड में चले जाओ चलो. तो क्या हो रहा है? या डी एक्स वाई भाई फट गया है. डी एस वाई फटा है. चलो भाई, चलो स्कैल्प करो भाई, सेलिंग में स्कैल्प करो भाई. आई एम स्कैल्पिंग सेलिंग. बोला था ना भाई. क्या क्या बोला था तेरे को? ऐसी होती है, बस ऐसी ही होती है ट्रेडिंग. कितने पिप्स कैप्चर किया? 292 से. 40 पिप का ही है, ठीक है. फिर भी ज़्यादा भी कर सकते हैं. एनीवे, सो closing happened below this level, so this became a breaker block. Now the main thing is, यहाँ से हमको लिक्विडिटी ले लिए. ये तो एक कैंडल तो लिक्विडिटी ले लिया इसका. इसका तो हो गया, इसका लिक्विडिटी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया. तो टेस्टिंग 87 का लेवल करेगा, करके बाइंग का कुछ देगा हमें. देखते हैं. क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, तो आई मीन उसका टेस्ट भी हो गया, तो इट डजंट मैटर. सो लेट्स सी. लिक्विडिटी तो हो गई है, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कि इतना अच्छे से बाइंग आ रही है. बाइंग तो नहीं आ रही. वी डोंट हैव दैट मच बाइंग. If you're still holding this trade, if you're biased on this, भाई 140 150 पिप्स तो शार्पली होंगे अब तो. बाइंग आ रही है, दिख रही है भाई थोड़ी तो. 1 मिनट में करे क्लोजिंग. ठीक है, हम यहाँ से कर सकते हैं. छोटी सी बाइंग करेंगे. तो स्टॉप लॉस रहेगा, अच्छी खासी स्टॉप लॉस रखेंगे. 40 पिप्स का स्टॉप लॉस तो रखेंगे ही रखेंगे. ठीक है, मैं एंटर्ड किया हूँ. यहाँ पे क्या था? 290 पे एंटर किया था. अब एंटर भी करना, अब भी कर सकते हो एंटर. तो ये वाला ट्रेड ना अब भी एंटर कर सकते हो आप, क्योंकि ड्रॉडाउन आपको कम मिलेगा. ठीक है, ड्रॉडाउन कम मिलेगा. सो एंटर ट्राई ट्राई करना, एंटर करने को, क्योंकि रिस्क फ्री तो दे जाएगा यार. देख, रिस्क फ्री तो दे जाएगा, मेरे को लग रहा है कि रिस्क फ्री दे जाएगा. इसकी तो, ये तो रेड कैंडल फॉर्म करना है ना, तो ये एक दिक्कत हो सकती है. बिना दिस, because I'm seeing buying coming after this, even though it doesn't touch this level. So should we wait for that level? वेट करते हैं क्या?
वेट कर सकते हैं, यहाँ से बैठ से कर सकते हैं हमें। वी हैव इट ऑलरेडी इन आवर स्टॉप लॉस। ठीक है, देखते हैं। इफ यू आर एंटर्ड, रिस्की ट्रेड है, एंटर रह सकते हो। अगर नहीं रहना चाहते तो यहाँ पे ही बुक कर सकते हो। बट सी, तो आई टोल्ड यू दिस राइट। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्वीप तो हो गया, स्वीप तो हो गया। अब गुड कैंडल की क्लोजिंग आएगी या नहीं, देख कब आएगी, तब ये क्लोज होगा इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर एक। अब 1 मिनट में इसके लेवल के ऊपर क्लोज होएगा तो इट्स ए गुड कंफर्मेशन, इट्स गोइंग इनटू बाइंग। इट्स नॉट कि इट्स गोइंग इनटू बाइंग, इट्स गोइंग इनटू बाइंग, नो, बट इट्स a good confirmation it will go into buying, right? So, or it could form a green red candle here and form a bigger green candle here, right? That would be good also, but this level 288 का level उतना तो ठीक नहीं लग रहा। Let's wait for this, let's wait for this, we'll wait see। but if you're entered, please be entered। I mean, वो आपको तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। 285 तक तो रखेंगे हम स्टॉप लॉस, 40 उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। आज तो बहुत तो छाप लिया। We can try to push our luck a bit more। क्लोजिंग 5 मिनट की क्लोजिंग इतनी भी खास नहीं है। देखते हैं ये कैंडल, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कैंडल बिकॉज इस लेवल की टेस्टिंग तो हो गई, ग्रीन रेड कैंडल हो गया। तो ये जो अब बना है, रेड रेड, जो रेड बना है, मतलब रेसिस्टेंस बना है, इसका तो टेस्टिंग हो गया और रेड कैंडल हो गया। तो अब ये कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इट इज अ प्रॉब्लम। सो 291.5 के ऊपर आई एम वेटिंग फॉर इट्स क्लोज। इफ दैट हैपेंस ना, भाई रिस्क फ्री हो जाएगा, ट्रेड चला जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। या आई थिंक, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। क्या ही मार्केट में ही हिला रहा हूँ क्या? उसको टेस्ट किया है, क्लोजिंग तो नहीं किया है, और भी 4 मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए। बट मोटा मोटा लग रहा है कि हमारे साइड में जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। 40 पिप का ही का ही तो है ऐसे। हाँ, हाँ भाई आ गया, आ गया, मैं बोल दिया और आ गया ये। देखो, दिस इज व्हेन यू आर बाइंग इन अ सेलिंग मार्केट, वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि वो लेवल पे आता ही रहेगा, जो भी अच्छा हो, इतना भी अच्छा लेवल हो, it will come back to that level, it will test that level, it will try to make you uncomfortable that level। ओके, DXY का देखते हैं एक बार। भाई ये तो फोड़ रहा है, क्या कैंडल बनाई है भाई, ये क्या क्लोजिंग दिया है भाई, मेरे को डर लग रहा है सही में। क्योंकि वो जैसे क्लोजिंग दिया है ना DXY, क्या क्लोजिंग है इसके ऊपर, क्लोजिंग भाई साहब, डर तो लग रहा है। रिस्क भी नहीं हुआ है ना तो इसका, इसीलिए थोड़ा रिस्की है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज हो जाता भाई तो मजे ही मजे। देखते हैं, लक को प्रूफ ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी 350 पिप्स तो कर लिया हमने। 350 पिप्स, 250, yes, 250 in the that trade, the selling a trade overall। and yeah, two selling trades। एक तो वो था, एक तो ये अब जो अपने जस्ट वी डिड ना 100 पिप्स का ट्रेड, दैट। तो 350 पिप्स अब मोटा मोटा वीकली देखे तो ठीक ही कर रहे हैं।
बट इसका कैंडल भाई, मैं बोल देता हूँ, मेरे को तो 40-50 घुमाना नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ अगर क्लोजिंग है वहाँ पे कहीं पे ग- गंदी क्लोजिंग होती है तो बता देता हूँ, तो भाई ना कर। हाँ, हमारा लेवल तो टेस्ट हो गया है। जो भी अब अभी तक नहीं बाई कर रहा है ना, तो वो लोग यहाँ पे एक बाई ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आर सही से लगेगा आपका, और भी अच्छा होगा। आप 82 तक, 80 या 82 तक दे सकते हो, 50 उसका 82 तक दे सकते हो। ठीक है, आर सही से लगेगा आपका, अब यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। और 50 पिप्स पे रिस्क फ्री मतलब 87 से, ठीक है देखते हैं। मीन ये क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा, अगर इसके नीचे क्लोज करता है 30 सेकंड्स पे, भाई निकलते हैं हम। ठीक है, निकलेंगे हम। मतलब सेलिंग पे जाना चाहता हूँ अगर क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो। लेट्स सी, क्लोजिंग होता है उसके नीचे, क्या लगता है? क्लोजिंग बिलो दैट लेवल, अरे भाई क्लोजिंग तो उसके नीचे ही हो रहा है आई थिंक, निकाल दे क्या? भाई क्लोजिंग नीचे हो गया, चलो चलो, चला तो गया ट्रेड। 40 पे क्या ही बात है। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, मैं तो सेलिंग कर रहा हूँ, मैं तो सेलिंग का स्कैल्प निकालूंगा। DXY भी हमारे साइड ही है, तो सेलिंग स्कैल्प कर रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग स्कैल्प कर सकते हैं। और फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है तो फिर से सेल कर लेंगे, सेलिंग सेलिंग पे ही रखता है हमारा। ये मैं स्कैल्प कर रहा हूँ आई थिंक, आफ्टर दिस कैंडल ओनली आई हैव सोल्ड, सो मोटा मोटा आई एम कैप्चरिंग समथिंग, बट लेट्स सी कि हायर टारगेट्स क्या होंगे। भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है। हम्म, ये सही हो सकता है, अभी भी बाई कर सकते हैं इस लिक्विडिटी के बाद अगर कुछ सही से मिल जाए तो। एंड इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है, तो बाइंग लुकिंग गुड यार, बाइंग लुकिंग गुड, बाइंग लुकिंग गुड। बट बाइंग देगा डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम तो देगा बाइंग। भाई ट्रेड कहाँ है जो कमाई थी हमने? 5 मिनट का था। ये ना, सो भाई लोग, अगर इसको टेस्ट करता है तो सेल मारो। 287 को टेस्ट करता है, सेल मारो, क्योंकि डबल बॉटम तो आया नहीं है, तो इतना अच्छा लेवल नहीं हुआ ना। लेकिन सेलिंग स्टार्ट तो करना ही होगा कहीं से भी। मैं तो ठोक के मार दिया सर, क्लोजिंग के बाद ही मारा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ भाई इतनी गंदी क्लोजिंग तो तभी होती है जब बड़ा मुंह आने वाला है। वही है, जो इंट्यूशन ही है। लेट्स सी, देखो ये वाला ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो देन वी कैन, बट जैसे DXY जा रहा है ना, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दिस। सेलिंग में ही जाना का हमको, क्यों बाइंग कर रहे हैं? ठीक है, गुड बाइंग ओनली बिकॉज वी आर a double bottom as well, so I think strategy wise that's the best buying that we could have done। ठीक है, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। स्कैल्पिंग को भी कर रहा है, वही स्कैल्पिंग इसीलिए इतनी अच्छी बात है। देखो कैसे स्कैल्पिंग किया, यहाँ से किया था मैंने,
20 पिप का कुछ रखा था। देखो कैसे चल रहा है, शानदार ना। अब ये बात है कि टारगेट कहाँ तक है, कि 74 पे तो एक अच्छी वाली बाइंग आ सकती है जो टेस्ट नहीं हुई है अभी तक। तो 74 टारगेट रहेगा, है ना। लिक्विडिटी भी मिल रही है अच्छी खासी, तो ये लेवल पे हम ट्राई कर सकते हैं बाइंग। उसके पहले ही आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भाई क्या ही कर लिया हमने। बाय द वे गाइस, आपको ऑलरेडी बताया था मैंने इन द लास्ट स्ट्रीम्स एज वेल, आई वाज सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल 438 का लेवल, which is a good selling level. Where is, yeah, this was the selling that I did. Am I lagging? Anyways, I'm still holding this trade. So mota I'm doing around 1500 pips. 1500, more than 1500 pips I'm doing. Okay, that trade is already there, but the current trade is this. So liquidity sweep happened 5 मिनट पे कैंडल देखते हैं। लग रहा है कि अच्छा कैंडल है, लग तो रहा है अच्छा कैंडल है। जो भी स्कैल्प कर रहे हो कर सकते हो, स्कैल्पिंग अभी भी कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फिर भी सेलिंग द स्कैल्प्स, बिकॉज इट विल वर्क ब्यूटीफुली। सेलिंग स्कैल्प विल वर्क ब्यूटीफुली। डीएक्सवाई पे थोड़ा मूवमेंट आ रहा है तो इसीलिए यू कैन सी अ लिटिल टर्बुलेंस। 4 आवर पे देखे तो कुछ है ही नहीं, है इसका 99.9 पे, तो ये वाली टर्बुलेंस निकल ही जाएगी। बट क्या बढ़िया मूवमेंट था, डीएक्सवाई का बढ़िया मूवमेंट था। तो सेलिंग में रहना, सेलिंग में रहना अभी। आई मीन बुक सेल करते रहना, बुक करते रहना, सेल करते रहना, बुक करते रहना, ऐसे स्कैल्पिंग करना। ठीक है। सेम दिस आल्सो आई स्कैल्प 50 पिप्स पे कुछ क्या स्कैल्प किया था, अभी भी स्कैल्प कर रहा हूँ फिर सेम लेवल, बिकॉज इफ इट्स अ गुड लेवल ऑफ बाइंग इट विल गिव अ डबल बॉटम, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अ सेलिंग मार्केट। सो yeah, waiting for it, let's see. But the close happened na, close which happened below this is a गंदा क्लोजिंग यार। जो ये 3.5 मिनट में जो भी क्लोजिंग होता है, ये ये ना, ये आई थिंक नीचे ही होगा, नीचे ही होगा। आई थिंक अराउंड दिस 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 ओनली होगा, अराउंड हियर ही होगा। तो डबल बॉटम तो देगा ही देगा। तो टेस्ट टेस्ट करेगा इस लेवल को। इट माइट टेस्ट, इट माइट टेस्ट दैट लेवल विच विल बी सेलिंग लेवल। सो हमारा ट्रेड ये बनेगा। ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला ट्रेड है ऑलरेडी हो गया है, तो हम ट्राई कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का यही ट्रेड सेम फिर से ट्राई कर सकते हैं, फिर सेलिंग ट्रेड, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ओवर इफ यू कैन सी हियर। सो दिस ट्रेड we predicted a little bit ki that it will go down, but we didn't think this must go down this much। ठीक है। बट मोटा मोटा पे आफ्टर दिस क्लोजिंग ओनली वी नो दिस काइंड ऑफ मूव विल कम। बट आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, बाइंग पे इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि बताता हूँ, गोल्ड तो बुलिश है fundamentally, not it's bearish in the lower time frames, in the higher time frames also, but fundamentally bullish है, तो it will try to form at least a pullback। so like वो इतना fall किया है, तो where there is a good level here, let's wait guys, because let me stop talking, because here we can have a buy। Yep, we can actually have a buy here। Huh. I mean, double bottom though is kind of forming a double bottom. So I think we can have a little bit of buying, risk a very little amount. Okay. So yeah, you can buy from here. It's currently falling, but can try this buy.
targets would be higher only. uh, let's see what will happen with but let's also try to justify this level 279 if it's a good level of buying. If only if it's a good level of buying, then we will enter. 280, not seeing that much good things about this. 278 by good, but here it's a better thing. 74 is a better buying for me. बट स्कैल्प के तरीके से देखे तो डबल बॉटम बन रहा है, तो सही से बन रहा है, देखते हैं। इस फ्री तो करेंगे स्ट्रेट को 50 पिप्स। भाई 50 पिप तो नहीं रखूंगा मैं, रखते हैं 20 पिप। इस फ्री हो जाना 20 पिप पे, ठीक है। 20 पिप तो देगा ना। डबल बॉटम का आज तो एक बार हमारा चला गया, देखते हैं दूसरी बार दूसरी टाइप है। 5 मिनट में ना मेरे को उतना अच्छा नहीं दिख रहा है यार ये बाइंग। प्रेशर तो नहीं, बाइंग का प्रेशर नहीं दिख रहा, मे बी बिकॉज ऑफ दिस DXY ओनली। दिस गाय फ्लाइंग, गोल्ड इज नॉट दैट मच फ्लाइंग इनटू सेलिंग एज यू कैन सी। 50 मिनट का क्लोज हुआ नीचे भाई, तो हो गया नीचे। समझ गए, समझ गए आप लोग। तो अब रहेगा, अब कहाँ से सेलिंग करना है, ये इम्पोर्टेंट है। यही से कर सकते हो, आई मीन 50 मिनट ट्रेडर से यही से सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट इतना भी उल्लू नहीं है कि ऐसी सेलिंग पे चला जाएगा, लेकिन DXY तो कुछ तो करवा रहा है। न्यूज़ जानना है तो जान सकते हो। पे यार मेरा बाइंग अच्छी लेवल, अच्छी खासी बाइंग लेवल बाइंग बन रही है, तो ये वाली बाइंग निकालते हैं। एंट्री पे थी, एंट्री पे ये तो है। लेट्स ट्राई टू सेलिंग करते हैं अंटिल 74 तक। 74 तो भाई 60 पिप्स का है। एट दिस वॉल्यूम should able to be get that easily. डबल बॉटम भी दे रहा है, लेकिन इतना अच्छा लेवल नहीं है ना, अभी तो बात की है, ठीक है। तो सेलिंग में ही रहना, सेलिंग में रहना। अगर मैं तो इधर इधर से सेलिंग में हूँ, दोबारा गया था 1 2 3, तो आई एम इन सेलिंग, बी इन सेलिंग। नाइस गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो। क्या बोला था, क्या बोला था। चलो गाइस लेट्स गो, बाइंग करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। बाइंग करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन ओनली, बिकॉज ऑलरेडी एक बार तो हमारा एसएल ले गया। तो सेलिंग पे रहो, सेलिंग पे रहो। एक्सपेक्टेड मूव यार, एक्सपेक्टेड मूव, आई मीन बेरिश गोल्ड एक्सपेक्टेड। स्कैल्प करते रहना 100 पिप्स। 275 is a good level. Maybe we should buy from there, or at least TV तो उधर पे रखना, which is around 100 pips, where we entered from here after 5 minutes का closing के बाद, below this level, below this level के closing के बाद we did that, रखते हैं, ठीक है। DXY तो उड़ रहा है, लेकिन जब वो नहीं उड़ रहा है तब गोल्ड क्या कर रहा है, वो भी समझना है। देखो, जो जब नहीं उड़ रहा है तब ऐसी मूवमेंट दे रहा है, दिखा रहा है कि भाई मैं तो बुलिश हूँ, ये लोग तो मेरे को नीचे जाने दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो बुलिश हूँ, ये तो नीचे जाने दे रहा है, क्योंकि ये DXY तो साला ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो 274 पे ट्राई करते हैं बाइंग, अच्छी वाली, अच्छी खासी बाइंग, ठीक है। सेलिंग में शांत रहना यार, सेलिंग में क्या प्रेशर है भाई, इतने सेलिंग कैप्चर किए आज स्कैल्प्स में भाई। स्कैल्प्स तो
कैप्स तो भाई कितने कैप्चर किया है मैंने, ऐसा बहुत कैप्चर किया है। अभी भी इस ट्रेड में हूँ मैं, बस से, बिकॉज मेरे को पता है कि डबल बॉटम तो दे ही जाएगा, और मेरे ही लगता है कि यही वाला है जो अच्छी वाली बाइंग देगा। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से दूसरा सेलिंग भी कर सकते हो आप, स्टार्ट सेलिंग। बोलता हूँ मार्केट हिल ही जाता है, इस इंटरमीडिएट लेवल्स पे व्हेन देयर इज प्रेशर ऑलवेज टेल यू टू सेल, राइट। कर सकते हो। टेक्स वाई भाई साहब क्या कर रहे हो? 99.9 पे तो है हमारा रेजिस्टेंस फॉर डेल्स का, तो लगेगा भाई, उधर तो लगेगा। ठीक है, सेलिंग में मजा तो आएगा। चलो यहाँ से भी 82 से भी, 82 क्या लेवल है, तो लाइन बना हुआ है मैंने, यही से भी कर सकते हो सेलिंग। ट्रेंड लाइंस भी देखते हैं क्योंकि कभी कभी मिस हो जाते हैं ट्रेंड लाइंस। 1 आवर पे लेट्स सी कि कुछ ट्रेंड लाइन का फॉलोइंग हो रहा है। ठीक है, 1 आवर को ओपनिंग हुआ था, ओके 12:30 ना, ठीक है भाई, सही है। ओपनिंग हुआ अभी, अभी अभी हुआ है, टेस्टिंग दिस लेवल, ठीक है। 74 पे, चलो भाई 74 पे बाई करते हैं, है लेवल उधर। अभी तो नींद आ रही है, 70 तक है, ओ भाई साहब इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, 70 तक है तो बाइंग जब भी रिवर्सल पे करना चाहते हैं ना, दिक्कत तो आएगी आएगी, क्योंकि प्रेडिक्शन ऑफ दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ भी हो सकता है 256, 256 तो होएगा ही, 256 पे तो आई विल थिंक दे विल बी अ बेटर पुल बैक। बट यहाँ से आ सकती है क्या भाई, ऐसे 4 घंटे में देखते हैं। 4 घंटे, 4 घंटे पे तो ही वो बोला था ना मैंने वैसा ही। ठीक है, कितना दूर चला गया मैं, 74 लग रहा है भाई, जूसी जूसी लेवल। 50 पिप्स का बफर देंगे, सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक भी है, टारगेट्स भी अच्छा होंगे यार। करते हैं ये वाला बाइंग, 74 का बाइंग, हाँ। आफ्टर सेलिंग स्कैल्प में जो है, इसके बाद, इसके टारगेट के बाद करते हैं, मेरे को सही लग रहा है। मेरे को आज तो नहीं होगा, आज तो बाइंग पे ऐसा नहीं चला जाएगा कि ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि, देखो भाई 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 क्या कर रहा है DX भाई एक ही दिन में, BTC क्या कर रहा है, देखा। BTC तो मूव करेगा ही, क्योंकि उसका तो प्राइस एक्शन से मतलब ही नहीं है उसको। ये वाला मूव के लिए मैं वेट कर रहा था, ऐसा। BTC में ये वाला मूव के लिए वेट कर रहा था, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया था। ये वाला लिक्विडिटी लिया है इधर, वो ठीक ही है, क्यों मेरा आ रहा गलत था, ये वाला था। आगे स्ट्रक्चर ना, 600 पॉइंट, 6000 पॉइंट, कौन देगा भाई इतना पॉइंट। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई साहब क्या ही सेलिंग करी है हमने आज, क्या सेलिंग करी है। लेट्स गो गाइस, बाइंग आने वाली है, मेरे को लग रही है कि बाइंग आने वाली है। ये भी अच्छी सी रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर लिया, मेरे को लग रहा है कि बाइंग आने वाली है इस कैंडल में ही, मे बी, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता,
आई एम थिंकिंग कि इट डजंट वांट टू मेक दिस एन ऑर्डर ब्लॉक, सो बुक कर दियो यार गाइस, ये बुक कर दियो। इसको बुक कर देते हैं। सो फिर तो नहीं हुए, 90 पिप्स तो हुए थे, बुक कर देते बिकॉज डबल बॉटम है ना, डबल बॉटम पे तो डरो यार थोड़ा तो सेलिंग में। ठीक है, लेकिन वेट करते हैं इस लेवल के लिए। इसका मैं तो पीछे 4 आवर पे देखा था। लेट्स सी 15 मिनट पे कहाँ पे आ रहा है वो लेवल। यस, गुड लेवल ओनली इन आफ्टर लिक्विडिटी का ट्रेड कर रहे हैं हम, वी आर काइंड ऑफ डूइंग अ लिक्विडिटी ट्रेड। बट द नेक्स्ट विल बी 66। ये क्या बात कर रहा है तू? 68, 74। तो यहाँ पे बनेगा ओनली लिक्विडिटी ट्रेड, यहाँ पे तो मेरे को आफ्टर 68 दिख रहा है भाई। बाइंग तो आज बाइंग की तो ऐसी तैसी हो गई। एनीवेज, एनीवेज। मैं बोला था ना बाइंग आने वाली है, लेकिन इसके लिक्विडिटी की बात आना चाहिए। 74.5 के that should be a good level to buy, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट लेवल नहीं दिख रहा है नीचे। तो दिख रहा है 70 वाला, 70 से कर सकते हैं मे बी, 70 से कर सकते हैं। 74 मतलब 40 पिप्स का एस एल। ठीक है, 40-50 पिप्स का रख ही सकते हैं अगर रखना है तो। ठीक है गाइस, आई मीन कम ऑन गाइस, आई मीन वी लॉट ऑफ ग्रेट टुडे। लाइव स्ट्रीम पे तो फाड़ दिया हमने। बाइंग के एक एक ट्रेड तो चला गया, रहना दो। I mean, lot of we did lot of trades, so yeah, that should have happened. That should happen also. ऐसा नहीं कि ईगो बढ़ाते जाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मिनट कैंडल्स देखे? 10 liquidity sweep 75। भाई 75 से बाइंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, देखते हैं। अह, देखते हैं, अच्छी खासी बाइंग देखते हैं, क्योंकि पता चला जाएगा यार बाइंग आ रही है तो। एक्चुअली सेलिंग आ रही है DXY में, तो बाइंग पता चल ही जाएगा, पता चल जाएगा। डबल बॉटम है, एक्चुअली डबल बॉटम की बहुत अच्छी कैंडल आई है। देखो, अच्छी अच्छी खासी कैंडल आई है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाइंग। डबल बॉटम तो हो गया है जो हमको चाहिए था, बट आवर लेवल तो टेस्ट नहीं हुआ, विच इज फाइन, विच इज फाइन, इट हैपेंस। ठीक है, होता रहता है। DXY, it's yeah. So if this is a DXY का level, maybe this not a good level after all, right? That selling also we can do. But let's see. Buying पे तो I want a bigger confirmation than this. 1 minute engulfing तो दिख रहा है हमारे को। engulfing दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर टेस्टिंग, नाउ टेस्टिंग दिख रहा है, तो ट्रेड लगेगा। अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड लगेगा। नहीं यार, रुकते हैं, लेट्स वेट। हाँ, कितना वेट करते हैं, पता नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, आई मीन मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये वाली बाइंग उतनी सी अच्छी है।
लेट्स सी। स्टिल डबल बॉटम तो हो गया है। डबल बॉटम कहता है कि हमको बाय करने के लिए लेकिन ये वाला जो 75 का लेवल है फिर भी ठीक है। ठीक है लेकिन इतने सी बड़ा लेवल तो नहीं है। बड़ा लेवल मेरे को लगता है कि ये वाला 73 से इधर पे मैं दूंगा 70 तक। 70 तक तो दे सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी 70 तक आ जाता है तो भाई वो बाइंग विल बी दैट। सेलिंग स्कैल्प्स गाइस। सेलिंग स्कैल्प्स। ठोक के मारो सेलिंग। 10 पिप की सेलिंग स्कैल्प भी ले सकते हो एक्चुअली। ठीक है। लो भाई सेलिंग स्कैल्प लो। टेस्ट तो कर लिया क्या लेवल? उड़ रहा। एक मिनट मेरा थोड़ा एक सेलिंग स्कैल्प कर ही लगता है ना। भी नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत कर लिया है आज। बहुत स्कैल्प किया है मैंने। हम्म। ऑलमोस्ट देयर कम ऑन गाइस। आई थिंक लिक्विडिटी तो स्वीप हो गया है उसका। है ना? लिक्विडिटी तो स्वीप हो गया है। DXY को लेट्स डू इट्स बिजनेस। लिक्विडिटी तो स्वीप क्या हो? ठीक है। लास्ट बाय थिंग इज राइट सी दिस क्लोज बिलो दिस which is bad. तो सेलिंग मैं तो सेलिंग स्कैल्प से हूँ विद लिटिल स्टॉप लॉस। आप भी हो सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद दिस ना is this is our buying level. So let's see whether we should have a करना है तो सेलिंग में इतनी दिक्कत है। सेलिंग स्कैल्प्स तो हो ही पाएंगे। अब मैं तो सेलिंग कर ही रहा हूँ ऊपर से। 70 तक तो रखना ही चाहिए। ठीक है। आई मीन टेस्ट तो हो गया है गाइस। लेवल तो टेस्ट हो गया है। आई थिंक तो हो गया। तो अब आएगा कि ये सही लेवल है कि नहीं। 70 तक तो रखना ही है। 70 तक तो मिनिमम है। मिनिमम कैपेसिटी है उसका। मिनिमम तो रखना ही है। हम्म। ये टेस्ट तो हो गया। बाई करके तो देखते हैं थोड़ा। स्टॉप लॉस तो बड़ा लगेगा। 40-45 कुछ लगेगा। सेलिंग मार्केट में 40-45 पिप्स। इट्स अ लिटिल बिट हायर बिकॉज बाई बाई करना चाहता है ना। चलो भाई। लेट्स गो गोल्ड कम ऑन। गिव अस समथिंग मैन। गिव अस समथिंग। 1 मिनट पे तो ठीक ही लग रहा। 5 मिनट पे तो क्लोजिंग नीचे कर दिया है इसने। तो ये तो ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता। अगर एक ग्रीन कैंडल बन गया तो भाई मैं सेल कर रहा हूँ कहीं भी से कहीं बीच में से ही सेल कर रहा हूँ मैं 50% लेके वहीं से सेल करूंगा। समझ गया? अगर इस ये रेड कैंडल नहीं बनती ना। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं सेल करूंगा। आपको स्नाइपर ट्रेड्स बताता हूँ। यहाँ से सेल करूंगा 278 से सेल करूंगा। ठीक है। सेल करूंगा अंटिल हियर। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो। रेड कैंडल होती है तो भाई यहाँ रहने दो। ठीक है। स्ट्रैटेजी समझो। स्कैल्पिंग कैसी करनी है। ठीक है। समझ जाओगे। If you're watching the streams and if you're following me on Telegram and live streams, इसी वाली मार्केट के अंडरस्टैंडिंग तो इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस बिकॉज एक्सप्लेनेशन टू डिटेल मैंने किया है। ये अब अगर डबल टॉप देता है तो भाई मजे मजे बाइंग पे गोल्ड पे मजे करते हैं।
Red candle, expecting red candle. Yep. See, expecting red candle, आ गया red candle. Uh, it's a very long stream, guys. Stream तो बहुत लंबी हो रही है. मतलब ये captured a lot of pips, I know, but there is also a limit. I already set a limit for the number of trades that I do. देखो भाई क्या हो रहा है. चलो guys, this would be now would be the indication if it closes 1 minute पे भी closes होता है. मेरे को नहीं लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए, लेकिन डबल बॉटम दे रहा है लग रहा है, तो आई थिंक दिस वुड बी द प्लेस 70. तो आई थिंक विल बी अ बेटर ऑप्शन टू बाय, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो दूसरा एक ट्रेड लगा लेते हैं 70 पे. 70 पे तो सही वाली बाय. दिस इज द लास्ट बाय विल डू. इस कंफर्मेशन तो इधर नहीं मिला. आई मीन टेस्ट तो किया है लेवल, लेकिन कंफर्मेशन तो उतनी भी नहीं मिली कि एंगल्फिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है. डबल बॉटम दे रहा है, डबल बॉटम भी नहीं दिया है. अगर इसे में एंटर है तो प्लीज नहीं एंटर करना. मैं और मतलब इधर ही, मतलब 9 पिप्स का है तो निकाल देना इसको. ठीक है. इम्पोर्टेंट ये है कि इस वॉली कैप्चर कर सकते हैं हम. एंगल्फिंग दिखती है तो भाई भाई मेरे को कंफर्मेशन चाहिए. बाइंग के लिए वी नीड कंफर्मेशन. लेट्स सी, ये एंगल्फिंग बनता है 1 मिनट का, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं. लेकिन 4 आवर लेवल में तो इट्स अ गुड गुड लेवल टू बाय फ्रॉम. एंड 4 आवर कैंडल भी टॉप विक आई डोंट थिंक हैज इट मेड अ टॉप विक. भाई टॉपिक तो बना ही है एज ए गुड बेरिश कैंडल. यहाँ पे लगेगा सेलिंग. भाई सेलिंग करो, बहुत ही सेलिंग करो. मजे मजे से सेलिंग करो. बाइंग का बाइंग का एक्चुअली हमको सोच करना भी नहीं चाहिए इन द सेलिंग मार्केट. आई एम ट्राइंग टू शो यू कि रिवर्सल्स कहाँ पे हो सकते हैं. रिवर्सल्स, वेयर वुड रिवर्सल्स कम? Probably at these levels, at 4 hour के levels. Let's wait and see what will happen. But it's already very late, and the stream is also have gone very long. But remember the intuition, double bottom होना चाहिए, एक engulfing candle होना चाहिए at least 1 minute पे. 1 minute हो गया क्या engulfing? नहीं, engulfing तो नहीं मिला. Let's see, change of character भी मिलना चाहिए. अगर 1 minute में change of character मिल रहा है तो try कर सकते हो. Because this is a good level to buy from a 4 hour perspective. तो that confirmation is needed for us. ठीक है. अह, ठीक है, तो I mean not that good movement it's giving. The XY moving up and up and up. डबल टॉप देगा ये? कहीं पे तो दे भाई. ये वाले अब तो कवर हुआ है. ऑलमोस्ट हो गया है ये वाले अब तो कवर हो गया है. The selling will be 99,962. 962 is इधर पर. ठीक है, उधर पे थोड़ी सी दिख सकती है. तो भाई इनसे यही डिफिकल्ट हो गया. Let's try buying actually. If it doesn't close below this level, now let's actually try buying because this red candle already formed. Now it has nothing to prove and liquidity taken. Everything is going on par with this. So let's get into the buying.
यहाँ पे नहीं है। कौन सा चार्ट है? ये वाला चार्ट। ट्राई कर सकते हैं। देखो, आई एम इनटू बाइंग। आई बॉट इट समवेयर अराउंड हियर ओनली, बट डबल बॉटम के बाद ही बाय करना यू गाइस। This trade, which we are currently, I told you to take it out. I entered again, but because I'm seeing some movement which I've not seen all session for the buying side. At least scalp could be pullback also could be 140, 130 pips. So why risk? Why not risk something, some 40 pips for that, right? So ठीक है, let's do this. Buying करो, ये वाला buying करो. But double bottom पे बात करो. I'm doing before double bottom only. You do it after double bottom, please, because that will be better for you. Okay. I'm seeing good movement. Moment तो दिख रहा है मेरे को. ठीक है. That is all for today, guys. I mean, we have captured a hell lot of pips, a lot of scalps. I told you to scalp from the levels, and it worked beautifully. I told you to scalp here as well. 10, 20 pips, 77 से 72. 72 तक गया actually, which is we could have scalped 50 pips there. So all these smaller pips. Let's not calculate that because it's only for those who are quick at removing and putting orders at the same time. So, without considering that, we have captured 300, 250 pips ka move and 100 pips ka selling, 110 pips ka selling, and the other selling scalp, which was 90 pips as well. So in the live stream only we did 190, 200 pips के ऊपर तो कर ही लिया हमने, right? In the live stream only. So मोटा मोटा we are doing 250, 100, 350, 90, 440. जस्ट मिस हो गए. बाइंग पे करना था, बाइंग पे वो वाले 60 पिप्स भी कवर कर लेते हम, लेकिन -40 का नहीं बोलना है. -40 भी हुआ है हमारा एक. तो ओवरऑल पे 440 -40, 400 भाई. ओके ठीक है. आई मीन एक 100 पिप का ट्रेड लग जाता अभी. इस टाइम पे डबल बॉटम तो हो गया, तो यू कैन बाय गाइस. यू कैन बाय. दिस वुड बी अ गुड कंफर्मेशन फॉर यू. या डबल बॉटम तो हो गया. ठीक है, अभी बाय कर सकते हो. मेरे को नहीं लगता कि मतलब स्टॉप लॉस विल बी हायर यार. स्टॉप लॉस विल बी हायर. समझो क्या हो रहा है. मतलब उतनी सी बाइंग का दिखा है, लेकिन उतनी सी भी नहीं दिख रही है, और ये DXY साला चल रहा है ऊपर ऊपर. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये, तो भाई मत ही करना, बाइंग मत करना. क्योंकि वो उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं अभी इसका क्लोजिंग का बात कर रहा था ना. ये क्लोजिंग के बाद भी ये इतना ऊपर जा रहा है. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ये वाला कैंडल, भाई मत ही करना. वी हैव टू incorporate that also, right? ठीक है. डबल बॉटम दे रहा है. मेरे को तो नहीं लग रहा दे रहा. मे बी 70 पे ही देगा. यार देखो देखो यार, इट्स वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिंगल कैंडल ओनली फॉर दैट कि भाई इतने लोग बाय कर रहे हैं इधर से. ठीक है. वी विल हैव अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन. बाइंग पे तो आप इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बाइंग वी कैन डू एनीवेयर. आई मीन इफ यू बाय फ्रॉम हियर आल्सो, you leave it in the morning, it will going around here only 286 पे कहीं पे होगा. अगर ड्रॉ डाउन कितना भी 100 बिप्स का ड्रॉ डाउन रख ही देते हो, तो भाई उधर ऊपर जाएगा ही जाएगा. ये तो हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है. तो चल रहा ही चल ही रहा है. 1 मिनट में भी ट्रेंड लाइन के ट्रेड्स बन रहे हैं भाई. यही बोलो. ये वाला देखो, ये वाला ट्रेंड लाइन पे ये होगा टेस्ट इसका. बढ़िया. करो.
ठीक है, बहुत लंबी हो गया स्ट्रीम। लेट्स एंड दिस सेशन। We've captured a lot of pips. 400 pips किया है on total. 400 pips किया है, लेकिन 400 पिप्स किया है, लेकिन वीकली देखोगे तो वीकली कितने पिप्स अब थे यार हम? 380 पिप्स ना, 380 प्लस 400, 780 पिप्स गाइस। एक और 2 दिन बचे हैं, 2 दिन और बचे हैं, तो expecting we will reach tomorrow only, we should be able to reach 1000 pip ka week, right? I mean, it shouldn't be that difficult. How many pips to go? 20, 220 pips. 220 pips to go for a 1000 pip week, guys. So let's go. Tomorrow also we'll have news. Thursday पे unemployment claims का है news. So चलते हैं, रखते हैं, यही करते हैं। ठीक है, सेलिंग पे फोकस करना अभी तक तो। बाइंग का करेंगे तब बड़ी वाले कंफर्मेशन आएंगे। अच्छा अच्छा वाला कंफर्मेशन तो दिख जाएगा। अगर ये वाला अच्छी लेवल है 70 वाला, तो मार्क किया है हमने। क्योंकि अगर देखोगे ना, पीछे 4 आवर्स में जाके, 4 आवर्स में यस, अराउंड हियर इज अ गुड लेवल, आई नो दिस, बट 50 मिनट पे जाओगे देखोगे तो बोल रहा है कि 68 तक है ना? सो until that level comes and a formation of candles happen and double bottoms happen, until then we can't say anything. Okay, सेलिंग स्कैल्प करते रहो यार, बोल रहा ही रहा हूँ, कितने बार बोलूं? सेलिंग स्कैल्प करो करो, because see, confirmation of buying will be very high यार, और it will be also like this कि 1 आवर पे फिर आएगा वो, 1 आवर कैंडल के डबल बॉटम के लिए फिर आएगा। लेट्स सी, ये 69 का लेवल तो टच कर लिया है। अगर देखते हैं इधर से कुछ हो सकता है इसका, या चलेगा ये 56 तक, पता नहीं ना। मैं तो नहीं लग रहा, मेरे को तो उतना भी ठीक नहीं लग रहा है जो भी हो रहा है। सेलिंग में तो ठीक है, पर बाइंग में तो लेट्स नॉट डू बाइंग। गुड लेवल तो है, 70 का लेवल है। मैं बोला था ना, मैं बोल रहा हूँ कि बाई आप करके रह सकते हो इफ यू आर ओके विद द ड्रॉ डाउन, एनीवे 100 इसका ड्रॉ डाउन रखना चाहते हो तो, बिकॉज एनीवे ऊपर ही आना है इसको, क्योंकि सेल होना है, ऊपर ही आना है। ऐसा नहीं, 256 माइट बी द लास्ट इट विल गो, राइट? तो उतना बफर दे के बाई कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं करना है। इट्स नॉट हाउ वी ट्रेड। ठीक है, लेट्स सी। ये वाला कैंडल अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मतलब नहीं कि बाई कर दूं। हम्म, ये वाला अच्छा दिख रहा है, ये वाला कैंडल अच्छा दिख रहा है, एंगल्फिंग कैंडल है, बनी है थोड़ी बहुत एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अच्छी खासी लेवल है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, टेस्ट के बाद। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 1 मिनट पे तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं, बट देख 5 मिनट पे मे बी लेट्स गिव 5 मिनट का बबल बॉटम, but we are already one time already we are we've done this and we've not got a good result, so let's not do this. Let's have a bigger confirmation, engulfing the confirmation, then we'll do it. Okay, anyway, this candle, this is not on order block, is closing, this didn't happen below this level. Okay, anyway, let's end this session, guys. Great session we had. Expected selling, should have holded this trade, which would have been a very good trade, and इसका 300 उस चला जाता। बट ठीक है, इधर भी तो एक सेलिंग किया, इधर से भी तो एक सेलिंग किया, स्कैल्प्स तो बहुत किया। ठीक है, 400 पिप तो किया है आज, 780 pips into the week. Let's come back tomorrow with the same motivation and let's dominate the markets. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, let's meet tomorrow. Please subscribe to our channel
our Telegram channel and also YouTube channel, where we post trades every day and any updates regarding those trades. Okay. Bye bye. Take care. Until next time.